Alright guys, welcome back to another video. So today we are going to discuss about Nifty and Bank free trade setup for the next week. Okay, so let us understand first Nifty and try to predict what is going to happen in next week. Okay, so ये weekly time frame है Nifty 50 का. As you can see, we have been following a bearish order flow of the market. Okay, so जैसे कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई एरिया पे market has tested and then came down from there. So again a same thing can happen from this supply area. All right, so for that we have to go on a lower time frame कि ये जो supply area valid है या नहीं. On a daily time frame first we'll mark our demand कि target कहाँ तक ले सकते हैं. ये जो recent break of structure हुआ था, राइट, जहाँ ब्रेक करने के बाद जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में था, this demand was created, okay, which is around 16,600 के आसपास. So that can act as a strong support for us. Okay, और वहाँ से we can look for fresh long, or if break we can look for fresh short trades. Okay, so let's go to a 4-hour time frame. So we are trying to do a multi time frame analysis, a higher time frame to lower time frame, to find a better adult trading opportunities. Okay, so always try to understand कि higher time frame पे क्या चल रहा है, and then try to take trades on lower time frame. Okay, and if you want to learn how to do this and on your own basically, so you can join my course. You will get the link in my bio. Right now there is 15% off on my TBT mentorship, so yeah, check it out. Okay, so जैसे कि मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ कि अगर कोई POI रहता है, हायर टाइम फ्रेम POI रहता है, सो नेवर टेक अ ऑपोजिट डायरेक्शनल ट्रेंड. ओके, नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था मार्केट में फॉर कपल ऑफ डेज, बट वो अप ट्रेंड ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी ओवर whenever there is a strong और हायर टाइम फ्रेम POI. सो हायर टाइम फ्रेम POI पे जब भी मार्केट आया, ओके, so what we look is we look for a change of character. Okay, और change of character you can see कि 4 hour पे दो multiple times आया है. Okay, ये भी एक change of character है, उसको मैं एज अ सप्लाई मार्क करूंगा, बिकॉज इफ अगेन मार्केट ट्राई टू गो अप अराउंड दिस लेवल वी कैन लुक फॉर अनदर फ्रेश शॉर्ट एंट्री. मैं फ्रेश लॉन्ग कभी जाऊंगा व्हेन मार्केट विल ब्रेक 18,000 और 18,200 के लेवल्स के ऊपर. ओके, then we can easily target the all time high which is around 18,600. okay, so जैसे कि 4 hour पे change of character है, now we can go on to hourly time frame to inspect the prices which are happening here. So hourly time frame पे you can see we have a breakout structure POOS. then with that breakout structure obviously तो उसका demand भी रहेगा यहाँ पे. okay, so यहाँ पे when the market came back it broke that demand area. so इधर से ही sign मिला था हमें कि market is in a bearish move. okay, so now that is our change of character, CH. okay, that is our change of character. ये डिमांड को मैं हटा देता हूँ. सो डेफिनेटली एक पुल बैक का वेट करना चाहिए था, एंड पुल बैक कहाँ तक पॉसिबल था. ऑब्वियसली ये जो रिसेंट डिमांड था वहाँ तक पुल बैक पॉसिबल था, एंड ऑल्सो अगर मार्केट ट्राई वांट्स टू गो अप टू फाइंड इनफ लिक्विडिटी, तो 18,000 का जो डिमांड है विच इज़ आवर 4 आवर सप्लाई एरिया 4H supply, that can be also act as a strong supply. okay, I'm going to name it as 1H so that आगे जाके confuse ना हो हमें. okay, so we have a 1 hour supply. अभी we should look for our trades on smaller time frame. So we'll go on a 15-minute time frame. So 15-minute time frame पे क्या हो रहा है? 15-minute time frame पे when we have a breakout structure towards the downside, okay, and then वही imbalance को cover up करने के लिए market was making higher highs and higher lows. So people thought that market will go up from here also, but it's nothing but it was just a pullback towards the upside. All right, जो 15 minutes पे है, when did this uptrend happen? The uptrend happened actually from here.
so that is going to be my demand area. If market will try to take a support, market will take a support at 17,200. okay, और ये जो लोअर लोस हायर लोस मार्केट फॉर्म कर रहा है, दिस विल एक्ट एज अ डेफिनेटली एक्ट एज अ लिक्विडिटी. सो रिसेंट डिमांड अगर बताए तो वी हैव ओनली दिस सपोर्ट which is around 14,000 sorry 17,450. अगर वो ब्रेक करता है then we can look for fresh short trades around 17,200 levels. okay, so अभी देखते हैं ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम विच इज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है हमें. ओके, सो एज यू कैन सी विदाउट एनी support of supply, it fell down. okay, and why did that happen? It was nothing but just a trap and also a liquidity grab for the retailers. okay, so the institutions sold here, okay, and booked their profit here. Again retailers bought. okay, that means basically they neutralized their position by selling to the retailers. So retailers bought here and then it pushed the market towards the upside, and then they got better opportunity for them to book more profit. So once the market hit 17,700 and 800 का जो सप्लाई यहाँ पे था, वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया धीरे एंड स्लोली एंड स्टेडीली. व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्लोली एंड स्टेडीली? बिकॉज यू कैन सी दिस कंसोलिडेशन, इट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अभी आप बोलोगे तो आपको तो ऑब्वियसली पता रहेगा बिकॉज SGX निफ्टी इतना डाउन है नहीं. अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम को चेक करूं तो दिस वाज नथिंग बट अ लिक्विडिटी ग्रैब. ओके, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद we can see that there was a breakout structure. okay, multiple breakout structure towards the downside, so that gave us the enough confirmation कि market एक bearish order flow को follow कर रहा है. okay, ये supply पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे भी एक सप्लाई पे सपोर्ट लिया. दैट मीन्स मार्केट ऑलरेडी gave us a sign that it is going to go down. okay, so tomorrow as we, if रेयर के सिनारियो अगर निफ्टी SGX निफ्टी फुल रिकवरी देता है, ओके, एंड फ्लैट ओपन होता है, आई विल स्टिल नॉट गो लॉन्ग अनटिल एंड अनलेस ही लॉन्ग हमें अभी तक नहीं, अभी तो फिलहाल लेना ही नहीं है. बिकॉज जहाँ पे भी देखो देयर इज अ supply area. First of all, we're inside a weekly supply, then we have 1 hour ka supply, and then we have 4 hour ka supply. So only initiate your longs when market breaks this weekly supply which is around 18,200 levels. और अगर मुझे fresh long लेना है तो I will consider fresh long at 17,200 के डिमांड पे ओनली. वहाँ पे अगर ऐसा ट्रेड सेटअप बनता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला बनता है, देन ओके. ओके, बट अगर वो भी ब्रेक करता है तो वी हैव अ होल लिक्विडिटी पूल अराउंड दिस पार्ट, वो उसको फिल कर सकता है. देन वी कैन सी 16,650 के लेवल्स. ओके, सो लॉन्ग तो अभी फिलहाल के लिए वी shouldn't be thinking about longs right now. Again, we have a breakout structure here. So that's it for Nifty 50. Again recap करते हैं इसको एक बार. वीकली सप्लाई पे मार्केट सस्टेन कर रहा है एंड लोअर हाइस फॉर्म कर रहा है. ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ओनली रिसेंट जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आता है वो यहाँ पे आता है एंड उसका डिमांड आता है अराउंड 15,000 के लेवल्स पे. ओके, अगर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस अगर मार्केट दिखाता है तो वी कैन ऑब्वियसली टेस्ट 15,000 ऑल्सो, बट वो तो बात की बात है. आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट दैट मच फर्दर हाइट. ओके, तो डेली पे वी हैव support at demand area at 16,600. all right, 4 hours पे there is no demand area, but unless we don't break any this level which is 17,100 और 17,000 का demand area, तब तक मैं कोई fresh short नहीं लूँगा. yes, I can consider a fresh short if we go below 17,500, but यहाँ से and between this I will not consider any fresh शॉर्ट ट्रेड. ओके, अगर फ्रेश शॉर्ट ट्रेड लेना है तो 17,100 के बिलो ही लेना है हमें. ओके, 1 आवर पे देखते हैं. 1 आवर पे यू कैन सी वी हैव अ 1 आवर का सप्लाई हियर वेयर मार्केट टुक अ
resistance, and then again uske above we have a 4 hour ka supply which is not been mitigated yet. तो if we try to pull back, अगर समझो कि आपने कॉल होल्ड करके रखा है, ओके, इफ यू आर होल्डिंग अ कॉल ऑप्शन जो सबके साथ होता है, इट्स कोई इशू नहीं उस पर, तो उसको आप थोड़ा टाइम और ज़्यादा होल्ड कर सकते हो अगर एक्सपायरी तक। इफ़ वी take a support at this demand, luckily for you, if you take a support at this demand which is around 17,500, तो आप होल्ड करके रख सकते हो फॉर 17,900। बट अगर ये सस्टेन नहीं करता, रिमेंबर इफ दिस डिमांड डजंट सस्टेन, देन exit your position with losses. It's fine, there are many better opportunity coming up in the market, so कोई problem नहीं। but just एक चीज़ याद रखना कि अभी अगर कोई भी upcoming events आता है स्पेशली इंडिया और यूएस के इसमें, so never take a positional trade. ओके अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो ऑलवेज टेक अ हेज पोजिशन, आइदर यू कैन गो विद स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी विद ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके on a 15-minute time frame, 15-minute time frame pe we have a multiple breakout structure towards the downside. No doubt there are multiple wicks, so usko refine karne ke liye we can directly go on a 5-minute time frame and you can refine it over there. Okay, but agar if you ask me, can market take a support at this swing lows? No, because there is no major breakout structure from those swing lows, so this areas are just going to be a part of it only. जो यहाँ से long थे using trend lines, they are going to be taken out by the markets. Okay, so ये हुआ निफ्टी 50। now let's see at बैंक निफ्टी, and बैंक निफ्टी क्या शो कर रहा है। and बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ओके, एंड इफ यू आस्क मी आप फ्यूचर्स के देखते हो, इंडेक्स के नहीं, स्पॉट चार्ट के नहीं देखते, इट डजेंट मैटर। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, तो आप कोई भी चार्ट से ट्रेड ले सकते हो। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी सेम विल गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि Nifty 50 is much weaker than Bank Nifty. Bank Nifty is strong, okay, because if I remove all of these drawings, okay, ये जो recent supply था Bank Nifty का, okay, which is around 38,700 के आसपास, okay, वो उसने break किया है, okay, with a strong engulfing candle, वो उसने break किया है and it's tried to sustain। ये अगर candle की बात की जाए, ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल था, इसने कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म किया है, इफ यू सी ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम एंड यूज योर इमेजिनेशन, इट फर्स्ट वेंट अप देन केम डाउन, और ये जो विक था इट वाज नथिंग बट अ रिजेक्शन। ओके, सो दैट इज basically market is making higher highs and higher lows. We grab a liquidity from this low below here and then went higher. Okay, सो एक बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एंड नो डाउट इट इज ऑल्सो मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, बट in compared to Nifty 50, it is taking a support at its previous demand area. It has no doubt taken multiple to support. जो first support यहाँ पे था उसने ये support लिया, but there was no breakout structure. It is haven't broke any previous high. But जब भी ये टाइम सपोर्ट लिया था, वी हैड अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाई। ओके, दैट इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो कंपेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी इज इन अ बुलिश ट्रेंड। बट ऑब्वियसली जैसे कि निफ्टी 50 अगर फॉल करता है तो बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली फॉलो निफ्टी 50, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी भी निफ्टी को देख के हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी 50 को ट्रेड करें। ओके, बिकॉज दे बोथ trade completely different, because Nifty 50 में there are 50 other companies from different sectors, so that manipulate Nifty 50, but in Bank Nifty there are only finance and banking sectors. Okay, so वो how the sorry फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म्स, उसके ऊपर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, एंड आई डोंट सी एनी weaknesses in those sectors. Okay, how to take a trade on nifty sorry bank nifty, it's bit difficult for us to predict, because obviously uh, weekly के
वीकली का जो सप्लाई था मार्केट ने उसको ब्रेक किया है. सो लेट्स सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम पे व्हाट वी कैन सी on a daily time frame. As you can see, as we are above that weekly supply, okay, which is now our failed supply, that will act as a demand area. ये जो recent supply रहेगा, मतलब अगर मार्केट सपोर्ट पे लेता है, प्राइस सपोर्ट लेता है, तो वी कैन टारगेट 40,000 एंड 41,000 के लेवल्स पे. ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आई डोंट सी एनी चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करूँ, वाई एम कंसिडरिंग दैट एज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया है एंड ब्रोक दैट high. Okay, and it has taken a support on that demand area. Okay, right now ये जो supply था उस पे no doubt we have multiple rejection from 2 days. Market is trying to take a rejection from that supply area. Okay, so no doubt it will be a pullback game from for Bank Nifty also, but come, as I told you, Bank Nifty looks stronger than Nifty 50. This is the recent demand which our market has already mitigated, which is around 38,000 के levels. Okay, अगर 38,000 पे वापस आता है और support लेता है, then there is something we can do about it. But अगर नहीं आता and we break that level, the next demand is at 36,500. Okay, so these are 4 hours demand area. Okay, 4 hour के बाद we don't have any demand area to consider. Yeah, there is one. Let's check on daily time frame. Daily time frame पे एक recent demand आता है, वो यहाँ पे है. So there is a lot of like डिमांड ऑन निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी हर एक डिमांड पे सप्लाई, सॉरी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. बट कंपेयर टू निफ्टी फिफ्टी वो जो डिमांड है उस पर अभी तक एक भी सपोर्ट नहीं लिया है. ठीक है, सो इसका देर आर मल्टीपल फैक्टर्स हियर दैट बैंक निफ्टी इज शोइंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंपेयर टू निफ्टी 50. Now I will just simply name them so कि lower time frame पे जाके we won't confuse ourselves. Okay, the 4 hour का demand यहाँ पे है, then another 4 hour का demand यहाँ पे है. Okay, so 4 hour के demand पे now we will go on a lower time frame 1 hour case पे. 1 hour पे we have a change of character here. With that, sorry, that is our liquidity sweep, not change of character, liquidity sweep. Then with that liquidity sweep, this is our change of character because it broke that recent demand area. So that means supply took over that. Okay, so change of character there. Now with that change of character, we can say that market has given us a reversal. Okay, so we can refine it on a lower time frame, a 15-minute time frame. So clearly market has given a sign that there are seller been taking over here. Okay, case first of all we have a breakout structure. Okay, with that breakout structure that brings us a demand area. Firstly जब भी एक ये sell off आया था, okay, market took a support on that demand definitely. So but ये अभी कंपेयरिंग टू जैसे कि SGX निफ्टी गैप डाउन देने वाला है, अभी बैंक निफ्टी का गैप डाउन कहाँ तक हो सकता है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉर those demand areas where there are possibilities कि मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले सकता है. एंड वी हैव टू चेक कि कहाँ पे ऐसे एरियाज है जो कि अनटेस्टेड है. तो हमने 4 आवर्स की जो भी सप्लाई डिमांड एरियाज थे उसको मार्क कर लिया, तो उसको हम थोड़ा रिफाइन करेंगे ऑन अ आर्ली टाइम फ्रेम. 15 मिनट्स थोड़ा छोटा हो जाता है फॉर बैंक निफ्टी बिकॉज ऑब्वियसली बैंक निफ्टी पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है कंपेयर टू निफ्टी 50. तो निफ्टी 50 पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी आर प्रेफर 1 आवर का टाइम फ्रेम. ओके, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये है, दिस डिमांड हैज ऑलरेडी बिन नॉट बिन मिटिगेटेड, सो दैट कैन एक्ट एज अ लिक्विडिटी पूल फॉर अस, सॉरी इंड्यूसमेंट फॉर अस. ओके, सो ये अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूँगा बिकॉज देर इज सो मच क्लटर राइट नाउ. सो डेफिनेटली अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है 37,300, देन आई कैन लुक फॉर फ्रेश शॉर्ट ट्रेड्स बिलो दिस बिकॉज ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स मिटिगेटेड हो चुका है. ओके, सो दिस विल एक्ट एज अ demand. Okay, so that means
बैंक निफ्टी के पास देर इज ओनली वन चांस टू टेक अ सपोर्ट, वो अराउंड रहेगा ये लेवल 38,300। ओके, अगर 38,300 को भी ब्रेक करता है, आई वोंट टेक एनी फ्रेश शॉर्ट ट्रेड। ऑब्वियसली उसको 4 आवर के डिमांड को ब्रेक करना पड़ेगा। स्टिल आई वोंट टेक एनी शॉर्ट ट्रेड बिकॉज नो डाउट यहाँ पे कंसोलिडेशन है एंड नो डाउट यहाँ पे मिटिगेट भी हुआ है, बट येस मार्केट्स आर सुपीरियर, एनीथिंग कैन हैपन। कहाँ से भी एक फ्रेश स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। सो ऑब्वियसली विल लुक फॉर अ कंफर्मेशन देयर। मैं डेफिनेटली पोस्ट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि क्या हो सकता है। ओके, नाउ 15 मिनट्स पे वापस आते हैं एंड लेट्स रिफाइन कि हमें हाउ डिड वी सॉर्ट इट आउट कि how did we got the direction कि market is now going to its bearish order flow। ये जो previous high था, market has tried to broke that previous high and definitely वहाँ से एक strong rejection आया, and as you can see we have a change of character there। with that change of character there was again a breakout structure that gave us confirmation कि एक bearish order flow पे market चल रहा है। okay, and यहाँ पे भी we can see that एक supply को sustain किया है and there was a strong rejection from there। okay, ये जो वीकली डिमांड है मैं उसको अभी फिलहाल के लिए निकाल दूंगा सो कि वो अपने एनालिसिस को क्लटर ना करे। ओके, नाउ कहाँ तक we can fall? definitely we can go below 38,840, sorry 800, and उसको ब्रेक करता है then we have 38,400 K levels। okay, we have a swing low here but that is equal lows, almost a equal lows, so there is nothing but liquidity below the low। so एक बार वो लो ब्रेक किया there will be again a strong sell off from those low। so वो ये swing lows ज़्यादा मैटर भी नहीं करेंगे हमें। so now we got a confirmation कि 38,300 is a demand where we should look for our fresh long trade। okay, now yeah, the we'll do a small recap again of bank nifty। so bank nifty following its weekly time frame पे definitely taking a support, sorry, on failed the supply area। so bank nifty as compared to nifty 50, bank nifty is much more stronger than nifty 50। on a 4 hour time frame we have multiple demands below on a 4 hour time frame। so taking a short trade, fresh short trade, only when it breaks 38,000 level we can look for targets at 36,600। okay, 15-minute time frame, 15-minute time frame pe we are in a bearish order flow। so on a lower time frame 5 minutes या हो या फिर 3 minute 1 minute will look for a fresh trading opportunity from those levels। okay, so yeah, that's it for today। if you like this video please hit that like button। if you have any questions regarding to a mentorship or charting, okay, you can comment down in the comment section what are you holding, puts or call, and how is your trading going on, everything whatever you want to say you can comment down in the comment section। and yes, there is a 15% off on our TBT mentorship, so yeah, click the link in my description। thank you so much for watching।